Hello everyone, hope all you're doing good. I'm going to share my makeup routine with you guys, which I currently have it on, and it is a 10 minutes makeup routine. Every morning I do it before I go to work, and I'll share with you guys with very less products and very less time. Alright, let's begin. The first thing we do is we always moisturize our skin before we put any makeup on. So I use Cetaphil moisturizer. I'm been using this moisturizer from last 3-4 years, and it is really helping me with my acne, with my pimples I used to have from 4 to 5 years ago. So we always make sure that you apply on every part of your face. मेरे फेक आई लैशेज लगी हुई हैं, तो आई कांट रब मॉइस्चराइजर ऑन माई आईज. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड मॉइस्चराइज माई eyelids. I don't use primers because I have a very oily skin, very oily skin. तो अगर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनी कर देते हैं. वो ऑयली शाइनी, नॉट अ गुड शाइनी, ऑयली शाइनी कर देते हैं, और मेकअप 2-3 घंटों बाद बहुत ही केकी सा लगने लग पड़ता है. सो आई ट्राई टू यूज मिनिमम प्रोडक्ट्स. So now the skin is moisturized. Alright. Now I'm going to use foundation, and you can use again any foundation you like or whatever suits to your skin. I use Bobbi Brown foundation for my skin, and this is N052 Natural Skin Long Wear Weightless Foundation. So थोड़ा सा फाउंडेशन लो, और अगेन आप अपनी फिंगर टिप्स के साथ, अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स के साथ और अपने ब्रश के साथ, जैसे भी आपको सूट करता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वैसे यूज़ करो फाउंडेशन. पर मुझे ब्रश के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ब्रश के साथ यूज़ करती हूँ. ऑलवेज मेक श्योर यू पुट फाउंडेशन अंडर योर आईज टू. Some people use concealer as well. You can always add concealer in your makeup routine, but as I said, I have a very oily skin, so I use very minimum products on my face. And this Bobbi Brown foundation gives me good coverage if I have any dark spots or any marks on my face. I have couple of patches on my face, but this foundation helps me cover those patches too. You can see right here. मैं ना थोड़ा सा मिरर में देख के इसको सेट करूं, क्योंकि मैं कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे अच्छे से पता नहीं चल रहा. मैं बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लेती हूँ लगाने के लिए. अब यहाँ आ गए फिर से हम. You can see how moisturizer already giving me that shine on my face. तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. Make sure you put foundation on your neck too. And after foundation, you use any kind of matte powder to settle your foundation. And I use Matte Perfection Powder Foundation. So this is the one I use. ये भी ख़त्म होने वाला है, इसको भी लाना है. And make sure you put it all over your face, ताकि वो जो शाइन सी है फेस पर, जो ऑयल से हो जाती है, वो चली जाए. मैट पाउडर लगाते ही जो मेरे फेस पे पूरा वो शाइन आ रही थी वो सारी चली गई.
The next step will be I'm going to give a shape to my eyebrows. So you can use this brush. And you do the same thing with the other one. And then you need to fill your eyebrows. If I have very light brows, very light eyebrows, so I use a little bit of this powder to fill my brows. And I use this brush. You take a very little product and just keep blending. I have a very bad eyebrows. You can start. See the difference between these two? Same thing you do with the other eyebrow. You use very less product. Don't use too much of it, otherwise your eyebrow is going to look very jet black. Done. And now I will contour my face, and I use this brush. You can see this angle brush for contouring, so it actually sit perfectly on your just below your cheekbone. And I use Becca palette to do contouring. Just use very minimal and keep blending. Blending is very important part of the makeup. अगर ब्लेंडिंग करोगे तो वो स्किन के साथ मेकअप बिल्कुल स्किन को फ्लॉलेस रखता है, और अगर ब्लेंडिंग नहीं होगी तो वो बहुत अजीब लगता है. So just keep blending. And then you can use any kind of blusher you like. And I use this color bar. ये मैंने इंडिया से लिया था. And just put it on your cheeks. I put it on my cheekbones. कुछ लोग यहाँ पर लगाते हैं blushers, but it's your choice. जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे लगाएं. That is pretty much it. और मुझे मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं है पड़ती, क्योंकि मेरे पास मैंने फेक आई लैशेस लगाए हुए हैं, तो इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग. और मैं बस थोड़ा सा ये ग्लिटर एंड ग्लो करके, ये मेरे पास एक छोटा सी बॉटल है जिसमें आईलिड्स पे लगाने के लिए ग्लिटर है. सो यू जस्ट कैन पुट इट ऑन योर eyelids. Look, you can see the sparkles, and do the same thing on the other one. And usually I use eyeliner if I go to parties or somewhere I have lot of time to put makeup on. लेकिन सुबह before I go to work I literally have only 10 minutes to put makeup on, तो I try and skip this process. उसके बाद आप अपने लिप्स पर जो भी आपको लिप कलर सूट करता है आप वो लिप कलर यूज़ करो. And always moisturize your lips before you putting any lipstick on. I did moisturize my lips before I started this video, so I always just blend lip liner too, ताकि थोड़े lips को nude सी finishing मिल जाए. And if you want to give a glossy finish to your lips, and right now I don't have a lip gloss near me, I completely forgot to put it here, but I got a lip balm and I just go on top of, so it gives you a very natural look. Look how natural lips are looking. And this is the final look. Ta-da! I hope you enjoyed my very quick makeup routine I do every morning with very less products and very less time. Thank you so much, and please don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye for now.